Assalamu alaikum everyone. This is Tayyiba Binte Mahmood and I am a lecturer at Faculty of Languages and Literature. Today we are gathered here to have a discussion about Faculty of Languages and Literature at University of Central Punjab. First we will be having a panel discussion in which we will be having a meaningful discussion followed by some questions that you guys will be throwing in. So you are more than welcome to comment any queries or concerns that you might have. I would like to introduce my panel first. So first we have Dr. Fahmida Sultana. She is the Dean of Faculty of Languages and Literature and she got her PhD from Tufts University, United States of America. Then we have Dr. Tahir Salim with us, who got his PhD from Air University, Islamabad, Pakistan. Lastly, we have Dr. Shafat Yar Khan, who is the Associate Head of Literature and he was formerly the Head of School of English at Minhaj University and now he is with us at University of Central Punjab. So now, without any further ado, we are going to begin our discussion. So my first question is from our worthy Dean, Dr. Fahmida Sultana. Ma'am, if you would kindly let us know about the programs that are being offered by our faculty. Okay, that's quite a basic question, but at the same time, sometimes students don't even know very basic information. Right. That's the reason why we are holding this session today, so that we can give them an in-depth information about what kind of programs we run here and what is expected of them. Faculty of Languages and Literature, it runs one undergrad and two graduate programs. Okay, we have two departments, Department of Linguistics and Department of English Literature. The undergrad degree, which is called BS English Language and Literature, it's a general degree which exposes students to the concepts of linguistics as well as literature. So through literary and linguistic studies, students learn how to analyze text, how to create and understand meanings of the text, okay, and at the same time hone their writing and reading skills. Our emphasis is a lot on developing their analytical and critical skills in this program so that they are prepared for the graduate studies later on. So bachelor's, as I said, it's a general degree, but for the master's, we offer MS as well as MPhil in English literature as well as in linguistics. Okay. Later we will talk in more detail about these programs. Okay, what are their requirements? Okay, the admission requirement, the degree qualification requirements, and so on and on. But emphasis in these two programs is more on advanced studies of literature and linguistics. Now, of course, I mean, students will be studying a specialized field relating to these two subjects or to these two streams. Okay. And then we have our premier program, which is PhD in linguistics. So these are the programs that we offer at FOLL, as it is known here. Thank you so much, madam. Dr. Shafat, तो आपकी तरफ आती हूँ मैं. मैडम बात कर रही थी अभी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि हमारी फैकल्टी ऑफर कर रही है और थोड़ा सा मैम ने ही मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट किया. क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या हमारा क्राइटेरिया है टू ऑफर एडमिशंस फॉर आवर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी. हमारे यहाँ यूजुअली जो एडमिशन क्राइटेरिया वही हैं जो HEC के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है एंड द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. अगर 50% मार्क्स हैं स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है क्योंकि हम बिल्कुल एक पेपरलेस यूनिवर्सिटी बनना चाह रहे हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, एडमिशन्स ऑफिस अवेलेबल है, वहाँ ऑन ग्राउंड लोग मौजूद होते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, उनसे आएँ, मदद लें एंड दे हेल्प यू फाइल दी एप्लीकेशन. तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है. उसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हर चीज़ इशू हो गई. अब वो आएंगे और एक छोटा सा टेस्ट होगा.
اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے جسٹ ٹو سی کہ ہم کس قسم کا کینڈیڈیٹ لے رہے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ یوزلی زیادہ تر لوگوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے. پھر ایک فی واؤچر جنریٹ ہوتا ہے جس کو ود ان دا گیون ٹائم جمع کرانا ہوتا ہے. تو یہ بی ایس میں بھی ہے اور ایم فل میں بھی ہے. تو ایم فل میں بھی 2.5 جی پی اے ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک انٹرویو زیادہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے کیونکہ ایم فل ایک ریسرچ ڈگری ہے. تو ہم بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو تیار کرتے ہیں اگلی ڈگری کے لیے. تھینک یو سر. آئی تھنک کہ آپ نے بہت اچھے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے سارا پروسیس, اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ. ڈاکٹر طاہر کی طرف میں آتی ہوں. اینڈ ون امپارٹنٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایڈ ان ڈاکٹر طاہرز انٹروڈکشن واز that he is one of the best researchers at University of Central Punjab. اسی لیے میرا اوپننگ کویشچن بھی ان سے یہ ہے کہ سر ریسرچ کی اگر ہم بات کریں تو یو سی پی اور پرٹیکولرلی ایف او ایل ایل میں فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر میں کیا ریسرچ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, کس طرح سے ریسرچ کے لیے گائیڈ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو؟ السلام علیکم viewers, thank you very much Miss Taiba for introducing me, and it is very generous introduction as well. Yes, at UCP we have extensive database. ہمارے ہاں بہت اچھی فیسلٹیز ریسرچ ریلیٹڈ اویلیبل ہیں. ہمیں یونیورسٹی نے ایکسیس دی ہوئی ہے کہ جو ٹاپ جرنلز ہیں, پبلشرز ہیں دنیا کے, لائک جے اسٹور کے ڈیٹا بیس کی ہمیں ایکسیس ہے, ٹیلر اینڈ فرانسس, وائلی, پروجیکٹ میوز اینڈ ادر ریسورسز آف ہائر ایجوکیشن کمیشن, اور یہ تمام ریسورسز کی ہمیں ایکسیس حاصل ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز وہ ایزیلی ان تمام ریسورسز کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہمارے لاسٹ ایئر اسٹریٹجک پلان کا حصہ تھا کہ ہم نے لنگوسٹک سوسائٹی آف امریکہ کی ممبرشپ حاصل کرنی تھی, اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن لینگویج ایسوسیشن کی. یہ دنیا کی 2 لیڈنگ ایسوسیشنز ہیں جن کی ہم نے ممبرشپس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے حاصل کی ہوئی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز دونوں ہی جتنے ان کے ریسورسز ہیں ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یو سی پی اینڈ فیکلٹی آف لینگویج اینڈ لٹریچر دے ہیو ایکسیس ٹو ایچ ای سیز ڈیجیٹل ریسورسز. وہاں سے بھی ہم آسانی سے اگر ہمیں کوئی ریسرچ کوئی بک چاہیے ہو, ریسرچ پبلیکیشن چاہیے ہوں تو ہم وہاں سے بھی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں. تو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ریگارڈنگ ایکسیسنگ اینی مٹیریل ریلیٹڈ ٹو ریسرچ. آئی تھنک دس از کوائٹ ونڈرفل کہ ہمیں اتنے سارے ریسورسز کی ایکسیس ہے, سو ایکسیسیبلٹی از ناٹ اے پرابلم. اچھا, ایک چھوٹا سا اور کویشچن اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آیا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے سپروائزرس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور چونکہ ریسرچ کا آپ کو پتہ ہے کنٹینیوس پروسیس اینڈ اسٹوڈنٹس کو ہر اسٹیج پہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, تو کیا وی ہیو اے سسٹم, وی ہیو اے پراپر سسٹم کہ بچے کانٹیکٹ کر سکیں اپنے سپروائزرس کو؟ ایگزیکٹلی, اگین ویری امپورٹنٹ کویشچن. جی بالکل, ہمارے ہاں بہت ہی اچھا ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا اپنے فیکلٹی میں. 2 لیولس پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اگر اسٹوڈنٹس کو جب سلیکشن کرنی ہو, اپنے چوائس اسے دیکھنی ہے کہ میری کیا فیلڈ ہے, اس میں مجھے کس سپروائزر کے ساتھ کام کرنا چاہیے, تو ہمارے ہاں ریسرچ کوآرڈینیٹر ہیں جو ان کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں, مینٹورنگ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو, اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کس پوٹینشیل سپروائزر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, کیا آپ کا ریسرچ ایریا ہے, اور آپ کا کون سا جو سپروائزر وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. سیکنڈ اسٹیج پہ ہمارے تمام کورسز کے کورس ایڈوائزرز بھی ہیں. وہ تمام اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس کو جن کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر, وہ ان کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ اسی لیے ہی اویلیبل ہوتے ہیں کہ ان کو بتا سکیں کہ آپ کی کون سا پوٹینشیل سپروائزر ہے جس کے ساتھ آپ کام آسانی سے کر سکتے ہیں, اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کا آپ سے ریلیونٹ ریسرچ انٹرسٹ ہیں. تو دس از ہاؤ وی ڈو دس. Okay, so this is a very well established system, we can say that. Yes. ڈاکٹر فہمیدہ, I am going to come back to you, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوالات جو میں پوچھنے لگی ہوں بہت دفعہ آپ سن چکی ہوں گی پہلے بھی, that why should students choose UCP and particularly faculty of languages and literature میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ ان کو یہی چوز کرنی چاہیے؟ Okay, first of all, we have a very impressive legacy of 30 years in the higher education, and that adds to the credibility of not only the university but the programs that it offers. So this is the first thing. The other is that when a student, chooses a university or a program to study, there are a few factors that one takes into account. Okay. Number one, as I said, the credibility of the
institution where he or she is going to enroll. Second is the faculty who's teaching there, okay, who will be mentoring and guiding them inside and outside the class, okay. Third is the infrastructure of the university, okay. And fourth is the location. And then the last one is the kind of environment that is provided to the students. Okay. So if we look at these factors one by one, I think we are one of the best university in the private sector in terms of our faculty, okay. We have most PhD faculty members teaching the graduate as well as the undergrad programs. Secondly, students have lots of freedom to choose subjects of their choice, okay. And at the graduate level, as Dr. Tahar earlier said, that they have the freedom to choose their mentors and their advisors as well, depending on their interest areas, okay, and depending on the research areas that they will be doing research in, okay. As far as the infrastructure is concerned, I think we have a state-of-the-art campus, okay, with the best facility from the digital to the physical, all, okay. And students can learn in a very pleasant, comfortable environment, okay. Outside the classroom also, the environment is very friendly, okay, and it is conducive for the students' holistic development of personality, from their intellectual to social outlook. We take into consideration each aspect of a student's life, okay, student life. So these are a few factors. And earlier I said that the campus location is also important for students. We are centrally located in Lahore, accessible from all four sides, okay. Public transport is easily available if you want to commute to the university through public transport. And then if you have your own transport, we provide you a very modern parking facility here too. Okay, so these are few of the factors that I would emphasize. Why should they come to UCP? As far as the graduate students are concerned, I'm sure, I mean, they want to know, okay, who will be teaching them and what kind of teaching and learning environment they will be offered. I think for graduate students, research is very important. Exactly. Okay, that's their first priority. And as you earlier said, that research is the focus of our faculty as well as students, okay. We are publishing in impact factor journals. Students are engaged in research from day one. They're allocated their advisors as well as their mentors from the beginning, and they're engaged on a very personal level in research activities. Right. And that's the reason, before they graduate, they have already published, okay. So these are a few factors, I would say. And then the fee, of course, which you perhaps later will ask, whether education is accessible or not. This is another factor, so we'll talk about that later. Sure, Yeah. definitely. Thank you so much for your input. Dr. Shafat, coming to you for my next question. So usually when we talk about a degree in languages or literature, so सबसे मेन प्रोफेशंस जिनका जहन में ख्याल आता है कि ये डिग्री करके हम लेक्चरर लग सकते हैं, किसी टीचिंग पोजीशन में जा सकते हैं, या टू सम एक्सटेंट कंपैटिटिव एग्जाम्स भी जहन में आते हैं कि यू कैन सिट फॉर CSS. सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हमारे स्टूडेंट्स के पास यही ऑप्शंस हैं, या क्या ये हमारी जो डिग्रीज हमारी फैकल्टी ऑफर कर रही है, क्या हम कोई और करियर पाथ्स भी अपने स्टूडेंट्स को अब दिखा सकते हैं that they do have this option, that they can opt for those paths? जी बिल्कुल, thank you very much for asking this very important question. देखिए, the first thing is English language and literature of course are at the helm of the world. जहाँ कहीं किसी ने कोई काम करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर नहीं कर सकता. तो टीचिंग, यस, बहुत बड़ा एक बेस है जिसमें हमारे टीचर्स
पैदा होते हैं, बनते हैं और उसके बाद ग्रूम होते हैं, तो यकीनन हमारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं कि वो टीचिंग में चले जाएं. ऑल राइट, एक बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी है जो कि जाना चाहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पर बगैर इंग्लिश के कोई काम नहीं हो सकता, तो उसकी भी ग्रूमिंग यहाँ पे हो रही होती है. यस, हैविंग सेड दैट, उसके बाद कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर नहीं इस्तेमाल हो रहा? आजकल इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है. फिल्म में देख लीजिए, जहाँ कहीं ड्रामा है वहाँ पर लिटरेचर है, वहाँ लैंग्वेज भी है, और हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं, ड्रामास एक्ट कर रहे हैं. यूसीपी के ड्रामास को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं. हमारा जो एक्सचेंज चल रहा है उसमें भी बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज वन. हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि लैंग्वेज अच्छी बोलते हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन एम्प्लॉयड बाय मेनी प्लेटफॉर्म्स जहां से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि छोटे छोटे राइटअप्स करने, रिपोर्ट्स लिखने, लोगों की जो पब्लिकेशंस हो रही हैं उनको वेट करना, प्रूफ रीड करना, उन्हें ठीक करना. मेजर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्ट्स लिखवाती हैं, उनको एडिटर्स चाहिए होते हैं. इस वक्त नॉवल राइटिंग, टेक्स्ट बुक राइटिंग में हमारे बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पब्लिशर्स के पास भी बैठे हैं और क्रिएटिव काम भी क्रिएट कर रहे हैं जो कि पब्लिश हो रहा है. हमारे बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज, उनके ड्रामास, उनके मुख्तलिफ और जो प्रोज राइटिंग्स हैं, दे आर बीइंग पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स. तो ये तमाम मुख्तलिफ तरह के प्रोफेशंस ओपन हो जाते हैं अगर आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर की डिग्री लेते हैं. तो सिर्फ वो जो पुराना एक तरीका था, वी आर नॉट लिमिटेड टू दैट, वी आर एक्चुअली ग्रूमिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द वर्ल्ड अहेड इन विच language and literature will be used everywhere, and particularly in media, film, drama and art, they are the basic necessities. Right. So I think that if we talk about how advancement has taken place, तो वाकई कुछ साल पहले तक ये traditional approach थी, and I'm glad that now our teachers know that, and through our teachers our students also know this, that they have a wide range of careers to choose from. Dr. Tahir, my next question is linked to this. Like UCP takes pride in claiming that we produce graduates that are market ready. So जब हम careers की या market की बात करें, so obviously the students need to know what is out there, what is in the job market, what does the market look like. So क्या what kind of facilities or opportunities, I might say, that we are offering, कि हमारे स्टूडेंट्स को पता हो कि what does the industry look like, how does the office space look like, वहाँ पे क्या काम उनसे expect किए जाएंगे. So do we make them ready for that before they graduate? Because if they get the exposure beforehand, obviously it is going to be a lot more beneficial. So what are we doing for that? Yes, we are doing that. और इसके लिए हम सारा साल बहुत मेहनत करते हैं. जैसे डॉक्टर सुल्ताना ने ऑलरेडी मेंशन किया, हमारा जो बीएस प्रोग्राम है उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, और सारा साल हम तकरीबन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन करते हैं जिधर हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं ताकि उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल सके, और ये थ्रू आउट द ईयर हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. और हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU साइन किए हैं. उनमें से स्कूल्स हैं जो लाहौर के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिशिंग हाउसेस हैं, and then many other private or public sector corporates where we are sending our students. और ये वहाँ पे जाते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी निगरानी में ये काम करते हैं, सीखते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं, और हम इन फैसिलिटीज़ के थ्रू हम उनको हेल्प करते हैं कि वो जो रियल लाइफ में जाके उन्होंने जो टास्क एग्जीक्यूट करने हैं वो उनको पहले से ही एक्सपीरियंस हो जाए. तो दिस इज़ हाउ वी आर फैसिलिटेटिंग आवर BS स्टूडेंट्स. दे ऑल आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप एंड गेटिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. That is great. मैं थोड़ा सा यहाँ और ऐड करूँ जी, sure, कि इसका और क्या फ़ायदा होता है to send them to the industry. Exposure to the industry's demands, okay, and then experience of the real world, okay, real corporate world, okay. When students, particularly in their undergrad studies, they are very dreamy-eyed, yes. and they have always the, dreams and ambitions that
once they graduate, they will have the corner office, but that doesn't really happen, okay? So once we send them to the corporate world, okay, as interns there, they know what is the value of hard work, what is the value of commitment to work, okay, what is flexibility, okay, what is decision making, how it is done, okay. So this is how they learn, okay, to adjust quickly to the demands of the marketplace once they graduate from our university, okay. So this is one aspect of these internships. Then there's another program that we have, VIS. Yeah. Yes, Okay, right. that also exposes them to the real world. Okay, most of our students that come here, they're from well-off families. Okay, they live very sheltered lives, and to them, life is what they are living. Okay, so you just demand and get. But there are, of course, I mean, other segments of society who cannot afford that kind of fulfillment of desires on the instant. Okay, so when they go through this experience, which is, I think it's a 3 weeks attachment with some community Yes, they program. have to do Okay, community work. exactly. So they're rendering service to the community, and at the same time they're developing empathy. Okay, that how the rest of the world lives and what's our responsibility and how we can contribute to this society which has given us so much. Right, you're absolutely right. Since we were talking about industry and internships, so my next question is that are there any opportunities for international collaborations as well? Because now the world is just a global village, as you know the term is, and we see so many institutes working together, and there are international collaborations between these different institutes. So are we doing that too? Is FOLL doing any collaboration right now? Yes, we are. Yeah, I mean, as you know, that the history of this institute lies in those collaborations. Okay, we started with collaborations in states as well as in Europe. Okay, later when we got our charter as an independent university, the whole idea, it became not our priority, but it didn't fizzle out. Okay, and we have always been striving to get these kind of collaborations with best universities in the world. Okay, right now, yes, we are having few collaborations, particularly with universities in England. Okay, and then in Asia as well. Many of our students have spent a semester abroad, as it is called, okay, in Turkish universities. Then recently, 9 of our students, they went on a cultural exchange program to China. Okay, so these kind of collaborations, we have cultural, but at the same time academic collaborations, which are very important. And in academic collaborations, mostly our collaborations are research-based. Okay, so research collaborations in which I think both of our departments were very actively working with their partners abroad. So yes, students have the facility to go to any university in the world. Number one, because of the reason that our credits are accepted all over the world. Okay, so they don't have difficulty getting admission in those universities. Collaborations, yes, they're very helpful, but I think now the world is changing the views. It's not that we should place our students in those universities necessarily. Okay, they can take a course online which is offered at UCP. Okay, in many departments and in FOL as well. Okay, through those seminars that we frequently hold here. Okay, conferences that are digital and online. Okay, through that we have our international exposure for the students as well as teachers. And since many of our faculty members, they had their education abroad, they're also in touch with their colleagues as well as their professors there, and this is how they keep on reviving their relationship with those foreign universities. And as such, this is the form of
you could say, international collaborations that has taken place. Absolutely right. Okay, Dr. Shafat, my next question is directed towards you. Usually there is a trend among institutions that they don't allow their students who are getting their MS or PhD degrees to work while they are pursuing that degree. And you know, even at a personal level, I can remember that when I was doing my MS, so I was doing a job, and at that time I think it's a priority for most of the students that they want Very to true. start earning on their own, but they also want to continue their studies. So my question is, do we allow our students to work while they are doing their, you know, postgraduate and doctoral degrees, और क्या इतना flexible schedule होता है हमारा कि एक फुल टाइम जॉब के साथ स्टूडेंट्स वर्कलोड, एकेडमिक वर्कलोड ऑब्वियसली चूँकि बहुत ज़्यादा होता है हायर एजुकेशन में, तो उसको स्टूडेंट्स मैनेज कर पाते हैं क्या? जी बिल्कुल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्टडीज़ हर कीमत पे जारी रहनी चाहिए. तो फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि वी अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू वर्क, जैसे मैडम ने अभी बताया. तो हमारी तो प्रायोरिटी ये है कि स्टूडेंट्स शुड गेट वर्क एक्सपीरियंस वाइल दे आर गेटिंग एजुकेशन एट यूसीपी. लेकिन उसके साथ साथ अहम बात यह कि स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. तो एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डूइंग इट, मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी engaged in content writing. Many of them are working on certain platforms जहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं और इस तरह की दूसरी जॉब्स हैं जो कि कॉल सेंटर से रिलेटेड यानी कस्टमर फैसिलिटेशन की है. और फैसिलिटेशन करने के बाद उनके पास इतना टाइम होता है कि दे कैन कम टू द यूनिवर्सिटी एंड एक्सेल इन आवर स्टडीज़. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को साथ लेके चलाया और उन्होंने बहुत अच्छा जीपीए भी लिया. तो ना सिर्फ ये कि यूसीपी उन्हें एनकरेज करती है, फैसिलिटेट भी करती है, फ्लेक्सिबल रखते हैं, लेकिन स्टडीज़ में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएस के जो हैं और पीएचडी वाले वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. और आपको ये पता है कि यूसीपी ने अभी रिसेंटली बहुत अहम एक अनाउंसमेंट किया है कि जो टीचर्स जहां एमएस के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए आएंगे उनको 50% फी वेवर भी दिया जाएगा. तो आप देखें कि कितना यूसीपी फेवर कर रही है पर्टिकुलरली टीचर्स को या उस वर्किंग क्लास को जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है. तो हम तो यहाँ पर बाकायदा फैसिलिटेट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, एकेडमिकली भी, कि बच्चे काम करें लेकिन स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज ना करें. इसमें मैं एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाह रही हूँ कि आपने पूछा कि क्या उनके पास वर्क फैसिलिटी है. okay. तो उसमें बिल्कुल उनके पास है. देखिए एक तो LIC है हमारा यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, उनकी कोलैबोरेशन से भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे प्रोफेसर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड देन दे आर पेड अ स्टाइपेंड फॉर दैट टू. And secondly, we have introduced now a student fellowship, okay, for the graduate students. It's not for the undergrad, but for the graduate students. So while they will be studying here, they will maybe become a part-time lecturer, but mostly they will be TAs to the professors, and they will be given a handsome stipend for that too. So work and studies, yes, both opportunities are there. मैम आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस कि हम फ़ी वेवर्स की बात करते थे, जैसे डॉक्टर शौकत ने कहा कि हर कीमत पे तालीम तो जारी रहनी चाहिए, Yeah. लेकिन बात यह कि तालीम की कीमत पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ गई है वर्ल्ड वाइड भी ड्यू टू इकोनॉमिक क्रंच. ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इवन इंटरनेशनली पीपल आर फेसिंग दैट. सो I think we need to talk about this, कि what is UCP doing, what is it offering like scholarships या fee waivers, और कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स में हैं हमारे पास जिससे हम फैसिलिटेट करें, एक्सेसिबल करें एजुकेशन को फॉर आवर स्टूडेंट्स. UCP has always been a very accessible institution. Okay, money is not a problem. Okay, as such, if a student has the merit, okay, money would not come in the way of one's goals. Okay, we have so many scholarships here, from the merit scholarship to PGC groups, alumni scholarships. Okay, then we have the scholarships for the disabled students. Okay, we have scholarships for the needy students. Okay, however, attached with all those is a certain level of performance that is expected from students. Okay, Of course. so they have to maintain a certain CGPA, which is important for them to know. It's not that
these kind of meritorious, particularly the scholarships that are given to the meritorious students, we expect meritorious performance from them too. Okay, if we are contributing, they have to reciprocate by performing well. Okay, this is how they become then the ambassadors of a university, and this is how we also know that if we are contributing anything in their lives, Right. they are taking it seriously too. Exactly. डॉक्टर ताहिर, हम सारे वो स्कॉलरशिप्स और फी वेवर्स की बात ही कर रहे हैं. एक रिसेंटली बड़ा हमने सुना प्रोग्राम का नाम विच वाज एजुकेटर एडवांसमेंट प्रोग्राम. तो ये क्या था, इसके बारे में ज़रा हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को आप बताएं, क्या था और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके लिए है ये? मिस तैयबा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता. हमारा जो एजुकेटर एडवांसमेंट प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो यूनिवर्सिटी ने लिया है. इसमें हमारे जितने टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बेशक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वट एवर लेवल दे आर टीचिंग, उन तमाम लोगों को हम 50% ट्यूशन फीस में डिस्काउंट दे रहे हैं. स्कॉलरशिप है और उसके लिए रिक्वायरमेंट इज़ वेरी सिंपल कि मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है. और उसके साथ साथ उन्हें ये करना होगा कि अपने जब जो उनकी स्टडी होगी उसके दौरान उन्हें 3 CGP अपना मेंटेन करना होगा. तो दिस इज़ द ओनली कंडीशन एंड दे कैन इजीली एक्सेस इट. और बहुत अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, और वो अक्सर आ जाते हैं, फिर हम उनको गाइड भी करते हैं, लेकिन अभी मज़ीद लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है. यस, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम सब पर्सनल लेवल पे भी ऐसे टीचर्स को जानते हैं जो कि किसी ना किसी लेवल पे टीचिंग कर रहे हैं, बट देन दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर एजुकेशन, क्योंकि वो फाइनेंसेस की वजह से कि वो मैनेज नहीं कर सकते, तो वो छोड़ देते हैं अपनी हायर एजुकेशन. सो आई थिंक ये बहुत अट्रैक्टिव हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि देयर इज़ नो कैच, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है इसके साथ अटैच. So we are simply making it easy. जी, मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि ये इनिशिएटिव इस तरह से भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि तमाम वो टीचर्स जो कंफर्टेबली अपनी फीस पे नहीं कर सकते और अपनी ग्रोथ को इन्हेंस नहीं कर सकते अपने प्रोफेशन में, तो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि उनको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है फीस में. तो वो अभी आसानी के साथ, मेरा यकीन है कि वो अब आसानी के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. इसके अलावा 25% discount to existing employees already exists at UCP. And then 100 students must know, okay, it's not a small thing, that 100% scholarship if you are a talented student. Okay, if you are scoring more than 80% marks in your FSC or FA, and you get admission at UCP, your education will be free if you just maintain a certain CGPA. Because there are no free lunches, they must know that. उसका ये नहीं कि हम आज आपको 100% स्कॉलरशिप अगर दे रहे हैं और आप समझें कि अब ये इससे मेरे से कोई डिमांड नहीं होगी. नो, ऑफ कोर्स, आई मीन, मैंने जो पहले भी कहा है कि यू हैव टू रेसिप्रोकेट बाय योर हार्ड वर्क, ओके, एंड योर सीरियस कमिटमेंट टू योर स्टडीज़. तो एक CGPA मेंटेन करना सेमेस्टर सिस्टम में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, तो 3.8 ये तो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो उन्होंने मेंटेन करना है. लेकिन PGC के स्टूडेंट्स के लिए अगेन दे गेट 50% डिस्काउंट एंड दे हैव टू मेंटेन ओनली अ CGPA of 3. ठीक है, और जैसे जैसे आपका CGPA फिर कम होता जाता है तो आपका जो स्कॉलरशिप है उसमें कमी आती जाती है. लेकिन ये नहीं है कि आपको हम स्कॉलरशिप बिल्कुल ही नहीं देते. तो आप सिर्फ उसी पॉइंट पे 0 पे पहुंचेंगे जिसमें आप या तो प्रोबेशनरी स्टूडेंट होंगे या आप फेल हो जाते हैं. लेकिन अदरवाइज अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और काम जो है अपना रेगुलरली कर रहे हैं, यू आर नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर, यू आर डिसिप्लिन्ड, so it's very easy to maintain these scholarships. I think that this condition actually serves as an incentive for the students to keep working hard. और ultimately अगर उनका GPA अच्छा है, grades अच्छे हैं, तो it is benefiting them in the end. Okay. डॉक्टर शफात, मैं एक बिल्कुल अब different topic पे आने लगी हूँ, and since we are living in a digital era, so AI, artificial intelligence, is something that all of us know now.
اور ہم لائک ماشاء اللہ یو آر سو سینئر, آپ کا اتنا ٹائم ہو چکا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, سو یو آلسو نو دس کہ ٹیک کے بغیر اب ٹیچنگ بھی سروائیو اس طرح سے نہیں کر سکتی ہے. سو اگر ہم بات کریں دیٹ ناؤ وی آر لیونگ ان دس ورلڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی, سو ویئر ڈز لٹریچر فٹ ان دس سینیریو؟ کیا یہ دونوں کوئی پیرل روڈز ہیں جو کبھی بھی کہیں پہ بھی جا کے انٹرسیکٹ نہیں کرتی, بالکل الگ دنیا ہے, یا آر دیر اینی انٹرسیکشن پوائنٹس فار دیز فیلڈس؟ Right. Thank you very much for asking this question and thank you very much for the praise. دیکھیں لٹریچر تو اس وقت سائنس کی بات کر رہا تھا جب سائنس کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرے گی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پہلا ذکر جو ہے وہ لٹریچر میں آتا ہے, سائنس فکشن میں آلریڈی یہ آ چکا تھا. تو اب لٹریچر کی کیا سگنیفیکنس ہے آج کل, اور وہ اے آئی کو کیسے کر رہی ہے, تو بہت آسان سا ہے. ہم نے اے آئی کو ایمبریس کیا ہے, ہم نے ڈیجیٹل ہیومینٹیز کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروا دیا جس میں بچے لٹرلی ریسرچ کر رہے ہیں بائی یوزنگ سافٹ ویئر. چیٹ جی پی ٹی اور دوسرے اے آئی کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہمارے کلاس روم میں کمپلسریلی استعمال ہوتے ہیں. ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ اسے استعمال کریں, وہ ہماری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں. لٹریچر میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ یہ کام اس سافٹ ویئر سے کر کے دکھائیے. تو ہم جو اسٹیٹسٹکس انالیسس ہے, جو ٹیکسچوئل انالیسس ہے, اس کے لیے سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی ایمبیشن ہے کہ ہمارے کلاس رومز میں ہمارے بچے سیکھیں کہ یہ کام صرف چیٹ جی پی ٹی سے پلیجرائز کر کے نہیں ہو سکتا, یا میں بغیر کسی کو بتائے ہوئے چیٹ جی پی ٹی یا میٹا اے آئی سے ایک اچھی پوئم بنا کے لکھ دوں اور اپنے نام سے چھاپ دوں. تو ہم نے تو اب یہ کہا ہے کہ بھئی آپ چیٹ جی پی ٹی سے کام کریں گے یا میٹا اے آئی سے کریں گے, کو پائلٹ سے کریں گے, تو آپ ساتھ نیچے لکھ دیں گے کہ یہ میں نے جو لٹریری انالیسس کیا ہے اس سے کیا ہے. ایز فار ایز کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ ادر تھنگز آر کنسرنڈ, یس ہمیں الگورتھمک پوئٹری کا سامنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مختلف طرح کے سافٹ ویئر کین بی یوزڈ ٹو رائٹ لٹریچر, لیکن اب ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بائی پاس کر کے وہ ایکسل کر سکتے ہیں ان دا ٹیچنگ اینڈ کریشن آف لٹریچر. تو ہم تو ایمبریس کر رہے ہیں, اور لٹریری اسٹڈیز جیسے ہو رہی ہیں دنیا میں, آپ دیکھیں باقی سب کچھ ہو رہا ہے, بیسٹ سیلر لسٹ میں ٹاپ پہ کیا ہے؟ لٹریچر, ناول. ساری دنیا میں جب فلم سٹڈیز ہو رہی ہیں, میڈیا سٹڈیز ہو رہی ہیں, تو اس کا ٹیکسٹ کون لکھ رہا ہے؟ وہ لٹریچر کا گریجویٹ لکھ رہا ہے, جس نے لٹریچر پڑھا ہے اور وہ لٹریچر کریٹ کر سکتا ہے, وہی ڈرامہ لکھتا ہے, وہ فلم کی اسکرپٹس لکھتا ہے. تمام جگہ پہ یہی ہو رہا. آپ کا ایڈ بنتا ہے, آپ کا خیال ہے کہ جو ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں اس کا اسکرپٹ کون بناتا ہے؟ صرف چند لوگ بیٹھ کے تو نہیں بناتے, ان کا لٹریچر کا بیک گراؤنڈ ہے. سو لٹریچر نے کبھی بیک آؤٹ نہیں کرنا, اور لٹریچر نے کبھی ختم بھی نہیں ہونا. اس ماڈرن ایج آف ٹیکنالوجی میں جب انسان بالکل ٹیکنالوجیکلی بائسڈ ہو گیا ہے, تو لٹریچر انہیں ہیومنزم بھی دے رہا ہے اور ویز آف کریٹیوٹی سکھا رہا ہے. So this will go on. I think that this perfectly answers the question that is literature relevant in this digital age. Yes, So yeah, بالکل. it is and it will be. جی. Dr. Tahir, اور سیکنڈ یہ کہ seeds of all scientific discoveries are in literature. ٹھیک ہے, جب سائنس فکشن لکھی جا رہی تھی تو مون کے اوپر پہنچنے کے لیے تو ایک امیجنیٹو جو رائٹر تھا ہمارا بیٹھا ہوا, وہی کہانیاں لکھ رہا تھا نا, اور اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اچھا مون کے اوپر پہنچا بھی جا سکتا ہے, تو لیٹس ایکسپلور اٹ. ٹھیک ہے, اور یہ سارا جتنا بھی آپ کا سائنس فکشن ہے, اس نے ہی یہ جو دنیا میں جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری لٹریچر سے ہی ایمرج کی ہیں. ایون ادروائز میں یہ کہوں گی کہ پولیٹیکل اور جیوگرافیکل جو دنیا کے اندر جو موومنٹس چلی یا چینجز آئیں, وہ بھی لٹریچر سے ہی تھی. وہ ایک کہانی لکھتے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا, کوئی سوچ رہا ہوگا سمندر کے کنارے کہ اگر میں اس کو کراس کر جاؤں تو پتہ نہیں اس کے بعد کوئی اور دنیا کیسی ہوگی. تو وہیں سے کولونیلسٹ جو آپ کے ہیں وہیں سے ایمرج ہوئے نا. تو وہ they were having those dreams of adventure, but at the same time they were building empires. اس میں ایڈ کر دوں میں جو میم نے فرمایا, بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں, ان کی اسپیچز کون لکھ رہا ہے؟
Right. दे आर लिटरेचर Absolutely. एक्सपर्ट्स जो उनकी स्पीचेस लिखते हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच लिखने के लिए जो लोग बैठे हैं दे आर क्वालिफाइड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ राइटिंग. और उसमें वैसे तो लिंग्विस्टिक्स में रेटरिक का चला गया, लेकिन हम लिटरेचर में रेटरिक तो पिछले 2000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लिटरेचर इज एवरीवेयर. जहाँ कहीं कुछ लिखा जाएगा उसमें लिटरेचर जरूर शामिल होगा. Right. इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही थी लिटरेचर की. डॉक्टर ताहिर, चूँकि डॉक्टर शफात और मैडम फहमीदा दोनों लिटरेचर के हैं, तो मुझे लग रहा है लिंग्विस्टिक्स थोड़ा सा पीछे रह गए. एंड सिंस यू एंड आई आर लिंग्विस्ट, सो लेट्स ब्रिंग लिंग्विस्टिक्स इनटू द डिस्कशन. आप रिसर्चर के साथ साथ टीचर भी हैं, यू हैव क्लासेस टू टीच. सो वही जो हमारी एआई की बात हो रही थी, एंड कीपिंग इन व्यू कि हम लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट्स को भी फोकस में रख रहे हैं टीचिंग के दौरान. सो डू यू थिंक एज अ टीचर you would allow, or do you allow your students to use their mobile phones, and particularly chat GPT? पे हर बच्चे को chat GPT का पता है, even स्कूल के students को पता होता है इसका. So do you allow your students to use that, और या फिर आप कहते हैं कि नहीं, खबरदार कोई भी फ़ोन ना निकाले, phones away, इस तरह से. So what is your strategy using AI? Okay, let me start from Dr. Shafat's discussion. जैसे उन्होंने फरमाया कि definitely these AI tools they have revolutionized our pedagogical approaches. और अभी टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है. रिसेंटली मेरे कोलीग्स फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हायर एजुकेशन कमीशन ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी जिधर AI टूल्स के बारे में सिखाया गया कि आप कैसे इसको क्लासरूम में यूटिलाइज कर सकते हैं. तो वो वहाँ से सीख के आए और इस वक्त पूरी दुनिया में ही इसको एम्ब्रेस किया जा रहा है. और हम भी लिंग्विस्ट भी पीछे नहीं हैं, हम भी इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं. और अब मैं यस आई डू अलाउ माई स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज दीज AI टूल्स स्पेशली फॉर टू डेवलप एंड एनहेंस देयर स्पोकन स्किल्स, देयर राइटिंग स्किल्स. और मैं इसके साथ साथ उनको क्लियर गाइडलाइन भी देता हूँ कि आपने, जैसे डॉक्टर शफात ने मेंशन किया, कि आप खुद से अगर जनरेट करके ले आते हैं तो गिव देम द साइटेशन एज वेल. तो आपने साइट करना है कि आपने कहाँ से ये सोर्स लिया है, कि चैट जीपीटी से लिखवाया है आपने या आपने खुद लिखा है. उसके साथ साथ इसने चैट जीपीटी ने काफ़ी हेल्प आउट भी कर दी है स्टूडेंट्स को कि वो पर्सनलाइज लर्निंग अब डेवलप कर सकते हैं. वो देख सकते हैं कि उनको किस तरह का एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, वो अपनी सेल्फ पेस के साथ स्टडी कर सकते हैं. वो इसके साथ साथ देख सकते हैं कि रियल टाइम उनको फीडबैक भी मिल सकता है. वहाँ टेक्स्ट वो पेश करके चेक कर सकते हैं कि उनकी जो सिंटैक्टिक एरर्स हैं अगर कोई हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन मैं इसके साथ साथ उनको ये भी गाइड करता हूँ कि जब भी आप ये AI जनरेटेड टेक्स्ट देखते हैं तो उसको क्रिटिकली एवेल्युएट जरूर करें सबमिशन से पहले, बिकॉज समटाइम इट डजंट आंसर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर. तो ये भी मैं उनको क्लियर गाइडलाइन देता हूँ. जैसे डॉक्टर शफात ने भी मेंशन किया, मैं उनको एथिकल जो इसकी कंसिडरेशंस हैं उनके बारे में भी गाइड करता हूँ कि आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी असाइनमेंट्स के लिए नहीं आप इसको दे सकते. जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स हैं वो हमेशा आपने अपनी जो इनपुट है उसको नहीं बोलना. ये ना हो कि आप खुद लिखना भूल जाएं और AI जनरेटेड टेक्स्ट ही आप सबमिट करते रहें. और मैं उनको भी ये भी बता देता हूँ कि नाउ वी हैव द टूल्स दोस कैन आइडेंटिफाई आइदर इट इज AI जनरेटेड टेक्स्ट और यू हैव रिटन इट. तो मैं उनको क्लियर गाइडलाइंस देता हूँ रिगार्डिंग एथिकल कंसिडरेशंस ताकि वो उनको सारी चीज़ों का इल्म हो. Because I think the students should ultimately know this कि it is artificial intelligence. है तो intelligence but artificial and it can make errors as well. Yes, sometimes. exactly. It So goes the wrong students should with citations as well. Exactly. तो मैं उनको बताता हूँ कि हमेशा citations भी जरूर चेक कर लें आप before submission. और मैं उनको clear बताता हूँ कि a competent writer can utilize AI tools effectively. तो आप अच्छे हैं राइटर्स तो फिर ही आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि उसने क्या जनरेट कर दिया है तो वही अगर सबमिट कर देंगे तो then you are going to be embarrassed. For the existing students, I will add कि ये होता भी है कि I mean they just download material with the help of AI and then submit as an assignment to teachers. तो मुझे भी कभी कभी मिलती हैं and I always wonder किसी ET ने लिखा है या मेरे स्टूडेंट ने ही लिखा है. तो उसके लिए बल्कि उनसे कहें स्टूडेंट से ज़रूर कि उनको पढ़ के हमें सबमिट किया करें और ये ना लगे कि एलियन ही का लिखा हुआ आपने हमें सबमिट कर दिया, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप आपके साथ है डायरेक्टली. हम तो सिखा रहे हैं, बाकायदा AI का इस्तेमाल सिखा रहे हैं. हमारे लेसन प्लान्स में भी हिस्सा है.
हम उनसे कह रहे हैं कि अच्छा जी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करना है पोएट्री का, तो आप खुद भी करें और एआई से करें, फिर दोनों का कंपैरिजन करें. हो सकता है एआई ने कोई चीज़ अच्छी की है, उससे आप लर्न कर लेंगे, लेकिन जहां उसने गलतियां की हैं आपको पता चलेगा कि जो नेचुरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इट इज़ फार सुपीरियर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हम तो ये काम जब क्लासरूम में करते हैं उससे लैंग्वेज का बहुत फायदा हो रहा है कि बच्चों को पता चल रहा है कि द मिस्टेक्स दे हैव मेड आइडेंटिफाई हो गई और वो उससे सीखते हैं कि अच्छा ये मैंने मिस्टेक्स आइंदा नहीं करनी है. तो हमने तो एआई को साथ लेके चलना. बिल्कुल. Thank you so much to all three of you for your wonderful insights and input, and I think our audience got to know a lot more about Faculty of Languages and Literature today. In the end, I would just like to add this for our prospective students especially, that university life is going to be a golden time, and वो अभी जो सारी discussion हुई है based on this, don't get panic कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो रही होगी, रिसर्च हो रही होगी. Trust me, when you come to UCP, you are going to have a lot of fun. Your classrooms are going to be really fun, both in linguistics and literature. You will always be finding yourselves doing different kinds of projects where you will be working with your friends और different तरह की आप activities कर रहे होंगे. So this is going to be a fun learning experience, and you will be learning a lot from your teachers. All you need to do is just fill in the application and see you soon. So thank you so much for joining us today. Allah Hafiz.